नमस्कार। हम नो हार्ट अटैक एवर क्लब, नो हार्ट अटैक एवर क्लब, दिल का दौरा कभी नहीं पड़ेगा कि क्लब की यात्रा पर निकल चुके हैं। वी आर ऑन द जर्नी ऑफ नो हार्ट अटैक एवर क्लब। इस यात्रा पर हम निकल चुके हैं और आज ही मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज भी नहीं, अभी कुछ कहना चाहता हूं। क्यों कि जरा सी देर हुई तो पता नहीं कितने लोग, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सफरर बन सकते हैं। छोटी सी बात छोटी नहीं होती, एटॉमिक बन जाती है। तो आज, अभी, कल नहीं, कुछ भी आवर्स हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन जो आज है वो अभी अभी करना है। क्योंकि द फैमिलीज, जो फैमिलीज भुगतती हैं, जो लोग भुगत जाते हैं छोटी सी बात का नेग्लिजेंस, छोटी सी बात को इग्नोर करने के लिए, तो वो बहुत बड़ी कीमत होती है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो ऑन द जर्नी ऑफ नो हार्ट अटैक एवर क्लब, we are here today to talk about something extremely important, rather atomic. What is that? That is the ignition, the spark of digestion. Because the topmost reason of heart attack is the digestion and the spark that creates a situation of cough, and cough gives inside the signals to welcome such conditions which create heart attack. Many things combined together. But the bodies, the human bodies which don't have cough, the tendency of cough, they are the safest possible. But इन केस ऑफ अवर क्लब, हमारी क्लब में हम इतनी ऊर्जा डाल देंगे कि अगर आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तब भी ध्यान रखा जाएगा। इट विल बी ए वेब, इट विल बी ए थ्रेड, जस्ट लाइक ए फैब्रिक वूवन बाय मेनी थ्रेड्स, वी विल वीव दैट। आप हमारे साथ चल पड़ेंगे, यू विल वॉक विद अस ऑटोमेटिकली। या दिस इज द ग्रेस ऑफ द क्लब। यही खूबी है हमारी क्लब की कि आपको साथ लेके चल पड़ेंगे, आप हमारे साथ चल पड़ेंगे और जो भी ब्लंडर्स हैं उनको आप ना पकड़ते हुए भी पकड़ लेंगे। अब नोट करिए इन चीजों को, आप ना पकड़ते हुए भी पकड़ लेंगे उन चीजों को। बिकॉज टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट स्पार्क, द पित्त इन आयुर्वेदा। When the pith, the Ayurveda spark is okay, the Agni is okay, the cough will stay away. जो बलगम बोलते हैं, the white material or the cough and all that, that will stay away. That cough, tendency of cough gives stagnation to the whole system. Wherever there is Agni, wherever there is Aag, wherever there is spark, no, nothing happens to the people who can maintain spark. The balances, whole universe, whole earth run with the balances. This much water, this much air, this much all that. When the balances goes away, जब ये संतुलन खत्म हो जाते हैं तो धरती का और ब्रह्मांड का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। ये चीजें जानने वाली हैं, ये बहुत अंदर जाना पड़ेगा इनके। सबसे बड़ी बात है कि भीड़वाद,
क्या कहेंगे लोग? द ओशन ऑफ इमेच्योरिटी, समुद्र भरे पड़े हैं बेवकूफों की बातों के, द ओशंस ऑफ इमेच्योरिटी। व्यक्तित्व की और इन चीजों की जो कमी है वो बहुत ही खराब है। और भीड़वाद, इतना भीड़वाद है कि एक ह्यूमन बीइंग जो इंटेलेक्चुअल है उसको कंफ्यूज करके रख दिया है, करे क्या क्या ना करे। तो इसीलिए मैंने बोला कि आज आप विचार करिए और हमारे साथ चल पड़िए इस क्लब के साथ, और उसमें जो ठोस चीजें हैं, कॉन्क्रीट चीजें हैं, सबसे ऊपर अग्नि, और सबसे बड़ा सिम्टम भी कफ, और ये चीजें होती हैं जब वो उसको हार्ट अटैक की सेंसेशन को हेल्प करते हैं, कभी भी किसी टाइम भी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड there should not be a cough type of tendency. Always stay spark oriented. अग्नि को मेंटेन करिए। अग्नि को मेंटेन करने के लिए आपको you should know that what food is good for you. You should have to be a doctor of self. अपने खुद डॉक्टर बन जाइए। आपको पता होना चाहिए कि कब आपने ये फूड ली, किस टाइम पे ली, और आपको वो सेंसेशन करती है कफ की, या स्पार्क नहीं देती, डाइजेस्ट नहीं होती। इसके ऊपर एक संविधान बना लीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए अपने साथ। देन यू कैन सेव योर फैमिलीज, योर सेल्फ एंड communities, the nations. Many people are suffering. When one person gets heart attack, whole family suffers, and he never comes back okay. He never comes back fine, because all the things go along with you if it happens once. So don't let it happen. No हार्ट अटैक एवर, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये क्लब है, कभी नहीं हो सकता। इफ यू वांट इट, इवन देन इट विल नॉट बी देयर। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, वी विल हैव टू कीप द ignition. We will have to stay away from cough. We will have to take foods accordingly and the timings. Never take the things which don't digest. Never take the things which create cough in the late hours. Always in the sun time, you can take some very little amount and digest it. And try to, I talked in my other video also, that the ginger root juice, fresh, not boiled or anything, not hot, with water and a pinch of salt, wonderful. The cloves, at night 4-5 cloves as per your health and all that, in a boiled water, wonderful. Because I have seen in my whole life the people suffering due to their ignorance, due to their calculations, due to their imbalances. Wherever there is imbalance, you get problems. So today I wanted to tell, आज मैंने ये बताना था कि स्पार्क के ऊपर कंप्रोमाइज मत करना। कफ की नेचर जो व्हाइट मेटल है, मटेरियल है, या एक बलगम बोलते हैं जिसको, वो है, उसकी टेंडेंसी से बच के रहना है। एज पर योर थिंकिंग, एज पर योर डिजाइन्स, वेयर यू लिव, which country, which place, which situation, but you will have to take care of these things. So, talk about this club, save many families, their kith and kins, because it's very sad when a person gets that. So, above all, save yourself from the bheedvaad. Immaturely people, they are talking this way. वो कुछ ना करने देंगे आपको, ना करेंगे। जब आप जाओगे तब भी चुप, अब भी चुप। दे विल से यू नथिंग बिकॉज दे हैव नथिंग। दैट इज नोन एज द क्राउड, द भीड़वाद।
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? These are लोग. Try to be self, try to know self, and then help others. What you want to do tomorrow, do today. Just know. Never wait. You never know. So, आज का टॉपिक, today's topic was spark. Today's topic was no cuff. Never cuff. How? By thought process. By taking on time. By taking few things in the sun time, not in the late hours. In India, the kadi chawal never take at night time. Never. Only in the sun time. Kadi chawal. And urad ki dal. These three things never take in the marriages at the evening time, at the night and all that. No doubt we have a current in our club, the joining of the people, we have a current. You will be saved from any problem, but still stay very, very careful. Never ever take kadi chawal in the evening hour and the urad ki dal in the night hours, always in the morning. And mostly if you take clove water boiled in boiling water at night, that can be more helpful. But for what? Spark. Okay, namaskar. And I will be there again before you. Many people would like to join this club because it's life-saving. So we joined it for you, not for us. And we never waited for a second, just launching it, just talking everything, just not let anybody suffer, because 10 minutes late, somebody suffered. Many body suffered. Okay, namaskar.